Nashaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Starting out today's video with the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Today we are going to talk about volume and capacity. And this is your teacher, Mehba Nasir. First of all, what is volume? Volume is a measure of amount of space occupied by a container or by anything. The amount of space that a container takes up is called the volume of that container or that object. Similarly, capacity is the amount of liquid or any other pourable substance, any other fluid that a container can hold. There is a small difference between volume and capacity. This particular lesson is particularly about capacity. Means we are going to talk about volume of a liquid, that is capacity. First of all, the standard unit of capacity is liter. Liter is used to measure the capacity of oil, juices, water, milk, and petrol, etc. It is abbreviated as L. L is the abbreviation used for liter. Instead of writing the whole word liter, we just write L with it. Just like kg was the abbreviation or the unit of abbreviation of kilogram, and kilogram is a unit of measuring weight or mass. So as you can see, oil, juices, water, milk, all these are liquids or fluids. हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, the amount of petrol filled in the car will be in liters. आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं and you want to fill gas or you want to fill petrol in your car, it will be in liters. That okay, fill the oil tank up to 10 liters or 15 liters or whatever. But milliliter is the smaller unit of capacity, and it is used with fluids that are to be consumed or to be used in smaller quantities. It is abbreviated as ml, m for milli, l for liter. आपने देखा होगा यूजुअली हम मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं, आपको वो फ्लूइड्स जो आपको स्मॉलर क्वांटिटीज में लेने होते हैं, उनको मेजर करके ही लिया जाता है ऑब्वियसली. एंड स्पेसिफिकली मेडिसिन्स, ऑब्वियसली हमें जितनी भी अमाउंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट लेनी होती है, एंड दैट अमाउंट इज यूजुअली in or measured in milliliters, that 5 milliliters or 10 milliliters, right? तो वी डोंट से कि जी आपने 1 लीटर की जो मेडिसिन जो है ये लेनी है. मेडिसिन्स आर यूजुअली टेकन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे आर मेजर्ड इन ml or milliliters. Now to convert liters to milliliters, you have to keep this in mind that 1 liter is equal to 1000 milliliters. Means 1000 milliliters combined to make 1 liter. To convert liter to milliliter, what you need to do is just multiply those number of liters by 1000 and you will get the amount in milliliters. For example, 2 liters means 2 times 1000 milliliters, or simply we can say 2000 milliliters. Or if it's 7 liters, means 7 times 1000, this will become milliliters, which is 7000 milliliters in this case. Now let's just practice converting liters to milliliters only. Liters को milliliters में convert करने के लिए तो हमने किया कि ठीक है जी, just multiplied by 1000. But if we have some quantity that is in liters and milliliters, for example, here we have 3 liters and 125 milliliters. What we will do is we will first convert these liters into milliliters and then add both the milliliters, just like this. 3 liters means 3 times 1000 milliliters, and then add the rest of the 125 milliliters in it, and we get our answer 3125 milliliters. Similarly, let's take another example. We have 9 liters and 48 milliliters. Look at it carefully. 9 liters is 9 times 1000 milliliters. Now we have to add only 48 milliliters in it. We usually
हम लोग गलती कर जाते हैं, 48 को उसमें कन्वर्ट करने लगेंगे और अच्छा जी ठीक है हमने जस्ट लीटर्स और मिलीलीटर्स हटाने हैं और सबको कंबाइन कर देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स कर देंगे इसको 948 लिख देंगे, which will be wrong. 9 liters means 9000 milliliters. Be very careful about the place values. So this in this case is 9048 milliliters. 9000 milliliters plus 48 milliliters gave us 9048 milliliters. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 liters and 4 milliliters. Now it's just 4 milliliters. जैसे हमने ये पिछली एग्जाम्पल में, लास्ट एग्जाम्पल में thousands, सॉरी इट्स hundreds place पर जीरो लगाया है because there was zero hundreds. 48 means 4 tens and 8 ones. Similarly 4 milliliters means 4 ones. So 5 liters means 5 times 1000, 5000 milliliters plus 4, we get 5004 milliliters. This is the conversion from liters to milliliters. Now to convert capacity or liquids from milliliters to liters and milliliters means we are now given some capacities or some fluids in milliliters only, and we have to convert it into liters and milliliters. What we will do is just think that what we have here is 8195 milliliters. We know okay 1000 milliliters are 1 liter. So here how many thousands do we have? We have 8000 milliliters, means 8195 can be written like 8000 milliliters plus 195 milliliters. Now these 8000 milliliters can be called 8 liters plus 195 milliliters, and now they can be written as 8 liters and 195 milliliters. The digit at thousands place will become our liters, whereas rest of the digits, hundreds, tens and ones, will remain in milliliters. Take another example, 3033 milliliters. Now 3033 milliliters can be written as 3000 milliliters plus 33 milliliters, right? Now these 3000 milliliters become 3 liters, whereas 33 milliliters stay here, and hence our answer is 3 liters and 33 milliliters. Let's have a look at a few word problems regarding capacity. Wasif has two buckets. One bucket holds 4 liter 450 milliliters, while the other one holds 5 liter and 180 milliliters. Find the total capacity of the two buckets. Whenever we are solving word problems or story sums, आपको बताया गया है you first have to analyze the word problem. इसको समझने की कोशिश कीजिए, break it into parts, understand it clearly, analyze कीजिए, क्लू वर्ड फाइंड कीजिए, क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम में एक क्लू वर्ड लाजमी होता है जो आपको बता देता है कि व्हाट फंक्शन यू हैव टू परफॉर्म ऑन दिस वर्ड प्रॉब्लम. इस वर्ड प्रॉब्लम को हम देखते हैं. वासिफ हैज टू बकेट्स. ओके जी, जस्ट इमेजिन ही हैज टू बकेट्स. वन बकेट कैन होल्ड 4 लीटर एंड 450 मिलीलीटर्स. एक बकेट की कैपेसिटी गिवन है, while the other holds 5 liter 180 मिलीलीटर्स. दूसरी की भी कैपेसिटी गिवन है. मीन्स बकेट 1 एंड बकेट 2 हैं हमारे पास और दोनों की कैपेसिटीज उन्होंने बता दी हैं. ओके, यहाँ तक तो बात समझ आ गई. क्वेश्चन आया लास्ट में, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टू बकेट्स. यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट स्टेटमेंट में आपको क्लू वर्ड वो दे देते हैं. Here the clue word is this word total. Whenever you see this word total or sum, you should understand, आपके ज़हन में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये क्लू वर्ड्स हमें बताए गए थे, एंड दिस टाइप ऑफ क्लू वर्ड इज फॉर एडिशन. टोटल जब भी आ जाए आपके जहन में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि वी हैव टू डू एडिशन. हमें दो कैपेसिटीज गिवन है, हमें टोटल इन ऑल बतानी है, तो वी विल बी डूइंग एडिशन. लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन. स्टोरी सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ही इसका सोल्यूशन देना होगा. वी कैन नॉट जस्ट पुट फॉरवर्ड द आंसर. So bucket 1 holds 4 liters and 450 milliliters. Bucket 2 holds 5 liters and 180 milliliters. We have to find the total capacity, and for that this word total tells us that we are going to do addition. Now let's start addition from ones. Better to write place values at the top.
0 plus 0 is 0. 8 plus 5, adding tens, we get 13. 3 is written down in tens column and 1 goes carry over hundreds. Now add up all the hundreds. 4 plus 1 is 5. Add the carry also, it becomes 6. Now adding the thousands, 5 plus 4 is 9. Don't forget to write the the units with it. 9 is liters and 630 is milliliters. Hence, our answer will be, find the total capacity of 2 buckets. So we'll say the total capacity of the 2 buckets is 9 liters and 630 milliliters. Coming to another word problem. The Hassan family buys 3 liters of milk for their daily use. If 850 milliliters is used to make yogurt, how much milk is left over? Now कमिंग टू द सोल्यूशन, सोल्यूशन से पहले हम अगर इसको एनालाइज करते हैं तो हमें ये लेफ्ट ओवर नजर आ रहा है लास्ट स्टेटमेंट में. दिस इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट ओवर कितना बाकी बच गया. ठीक है, पढ़ें. अगर हम ब्रेक डाउन करें इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पार्ट्स में. हसन फैमिली बाइज 3 लीटर्स ऑफ मिल्क. टोटल मिल्क कितना उन्होंने बाय किया? 3 लीटर्स. ओके, डेली यूज के लिए. अब उस 3 लीटर्स में से दे हैव यूज्ड 850 मिलीलीटर्स टू मेक योगर्ट. 850 ml उन्होंने यूज कर लिया फॉर योगर्ट. हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट ओवर फॉर देयर अदर पर्पसेस? राइट. सोल्यूशन की तरफ चलें. टोटल मिल्क योर मिल्क बॉट इज 3 लीटर्स. आई हैव रिटन 000 मिलीलीटर्स. क्यों लिखा है ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है. Now milk used for yogurt or for any purpose, that is 0 liters. Liters नहीं में नहीं है वो. It is still in 850 milliliters, right? Now what we have to find out milk left, and for that we need to do the subtraction. So subtraction हम again start करेंगे 1 से. 0 minus 0 तो 0 ही हो गया. ठीक है. Now coming to tens, 0 minus 5, we cannot subtract 5 from 0. What we need to do is हम 100 से borrow लेंगे, but 100s place पर भी 0 है. So first this 100s place will take borrow from 1000s place and then it will give borrow to the tens place. So this 3 liters will become 2 liters and it will give borrow to 100s place. It becomes 10 hundreds. Now this 10 hundreds will become 9 hundreds and it will give borrow to 0 tens and it will become 10 tens. Now 10 minus 5 is possible. Subtract 10 minus 5. We have 5. 9 minus 8 gives us 1 and 2 minus 0 obviously it is 2. So 2 liters and 150 milliliters is the milk left. Hence, our solution or our answer will be that 2 liters 150 milliliters or ml of milk is left behind. That's all for today. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe and share this video. And अपने comment section में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन क्वेश्चन ऐसा है, कंफ्यूजन ऐसी है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन